Hi, hello everyone. Hello, good evening, Yuvraj. How are you? Just let me know if I'm audible to you all. If you all can hear me. Hi. Yes, Yuvraj, tell me. गुड इवनिंग सर। Good evening, Yuvraj. How are you? सर आपकी तबीयत ठीक है? फाइन सर। Actually, not so good, but yeah, in a state to take class. सर आप आज भी छुट्टी ले लेते, कोई बात नहीं, क्योंकि कल अरे नहीं, पहले है। ऐसा नहीं होता है। ठीक है। सर क्योंकि सर जब पता चला था ना कि बैच आपकी मतलब इंस्ट्रक्टर की तबीयत खराब है और फिर नेक्स्ट डे दोबारा, तो मैंने पूछा था, उन्होंने कहा कोई ऐसा मेजर नहीं है, बट वो थोड़ा वेदर चेंज की वजह से है। मैंने कहा ओके। पता नहीं, मतलब कल तो मतलब जैसा ऐसा हुआ था, परसों रात को बहुत ज्यादा खराब थी, मतलब नॉर्मल उस कंपेरेटिवली थोड़ा कम। सुबह तक लगा कि ठीक हो जाएगा, मतलब ठीक रहेगा, तबीयत तबीयत ठीक हो जाएगा, बट कुछ ऐसा हुआ दोपहर, मतलब करीब 7 8 9 बजे सुबह से ही एकदम ही बहुत ही बुरे हालत में हो गया था। तो कल तो एकदम ऐसे ऐसे मैं बैठने की हालत में नहीं था, तो उसके कंपैरेटिवली आज बहुत ज्यादा सही हूँ। मे बी कि जस्ट अ स्मॉल, ठीक है यार, अभी तो लोग आए ही नहीं है, मे बी कि थोड़ी सी मेरी आवाज आज धीरे रहे, तो प्लीज बेयर विथ सर मी हाँ, फॉर। नहीं सर, सर लग रहा है, मतलब वो एक आपके अंदर जो जोश होता है ना, वो थोड़ा सा लग रहा है आज कि हाँ जी। लेकिन सर आप रेस्ट ले लेते, क्योंकि सर जब तक पूरी तबीयत ठीक नहीं होती ना, अरे तो कोई आप बात आज भी नहीं, लगातार 3 घंटे स्ट्रेस लोगे। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाकी इट्स सर आपने जो होमवर्क वगैरह दिया था वो मैंने कंप्लीट बहुत कर लिया था ज्यादा उसी दिन। ये वेस्ट हो जाएगा, टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा, वो नहीं होना चाहिए। और मतलब ठीक है, मतलब मैं हेल्थ पे बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा हूँ, कंपेरेटिवली सही है। 1 2 दिन में सही हो जाऊंगा, तो ऐसा कुछ है नहीं कि बैठे रहो। और तुम लोग बताओ कैसा है? 2 दिन अच्छे से यूटिलाइज किया, कुछ पढ़ा वढ़ा कि मौज हाँ करे? जी, हाँ जी, हाँ जी सर, अगर आप कहो तो आपको शो करता हूँ। आपने मुझे एक होमवर्क दिया था कि अपना रिज्यूमे बिल्ड करो हाँ HTML हाँ, से। दिखाओ 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 दिखाओ। ओके ओके सर। चलो कोई नहीं, तब तक लोग आ रहे हैं, आप शेयर ओके स्क्रीन कर पाओगे? अब कर पाओगे? ओके सर। ये तैयारी सर मेरी स्क्रीन ओके। दिख रही है? हाँ हाँ, दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है। सर ये मेरा रिज्यूमे है जो मैंने HTML से बनाया है, और ये उसके पीछे का कोड है। एक सेकेंड। कोड वो कोड रहने दो, ये मतलब मैं ये देख, अरे ये मत दिखाओ, मैं वो देख करके ही समझ जाऊंगा कोड। कोई बात नहीं, सर कोई बात आपको नहीं। ओरिजिनल रिज्यूमे दिखाऊं? काफी सही है, काफी सही है। सर एक बात ओरिजिनल बताओ, एक बात का बताओ मैंने बस। बिल्कुल टू
बस एक क्वेश्चन है तो मेरा। हाँ जी, हाँ ओरिजिनल जी रीजन सर। बताओ, ये जो आपने मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दिया है, मोबाइल हाँ नंबर और जी फिर दिया है, इसके बीच में आपने स्पेसेस कैसे दिए हैं? सर, NBSP कर करके ये ठीक है, ठीक सर, है। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ हाँ हाँ, समझ गया, समझ गया, समझ गया। चलो, जी सर। बहुत बढ़िया युवराज, मतलब आई रियली लाइक यू टुक द इंस्ट्रक्शन सीरियसली। मतलब क्लास में मैंने अगर बोला कि होमवर्क करो तो आपने किया। आई रियली लव इट। थैंक यू सो मच सर। सर बस मुझे एक चीज समझ नहीं आई थी, या तो वो HTML से शायद पॉसिबल नहीं है सर, वो ना मेरे जो रिज्यूमे है उनमें ना यहाँ पर आइकन थे, जैसे फोन का एक आइकन है, यहाँ पर कोई बात नहीं, व्हाट्सएप का था, हम यहाँ सी पर अभी जीमेल का था, सीखेंगे यहाँ पे ना, लिंक्डइन का था। अभी CSS सीखेंगे, बूटस्ट्रैप सीखेंगे, जावास्क्रिप्ट जी सीखेंगे, तो पूरा फंक्शनैलिटी अभी जो आप बीच में ऐसे NBSP किए हो ना, वैसा करने की जरूरत हाँ नहीं जी। पड़ेगी। अलग हाँ अलग सर, से। वही मेरे को था। मतलब सर, मतलब मुझे सेट करने के लिए NBSP को 10 बार चेक करना पड़ा कि एक आधा ज्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, सेंटर में कोई आ बात रहा है, नहीं, नहीं कोई आ बात नहीं। रहा। आपने इतना मेहनत किया, दैट आई रियली लव। एक काम करो युवराज, ऑन द यस सर। प्राइवेट चैट टू मी सेंड मी योर एड्रेस। ओके ओके सर, एक सेकंड। बट प्राइवेटली भेजना, ठीक है? मतलब एज तुम ठीक है पब्लिक। सर, सर ओके ओके। ठीक है, चलो। रियली लव्ड इट, रियली लव्ड इट। थैंक यू सो मच। यू ऑल कैन ऑल्सो टेक इंस्पिरेशन। सर मैं स्क्रीन शेयर बंद कर सकता हूँ अगर आपका हो तो? हाँ, कर लो, कर लो, कर लो, कर लो। सर मुझे एक्चुअली आपकी वीडियो एकदम डिसेबल हो गई, मुझे कुछ शो नहीं हो रहा तो सर, ये बहुत दिक्कत हो रही है पोर्टल में एक्चुअली। अब मैंने वहां से पोर्टल से ज्वाइन करा तो आज फिर वही दिक्कतें हो रही हैं, आवाज कट रही है और आपकी स्क्रीन ही गायब हो गई है, ब्लैकआउट हो गया बिल्कुल। अभी तो मैंने स्क्रीन शेयर नहीं करा है ना, अभी मैंने स्क्रीन को शेयर ही नहीं करा। नहीं सर, आपकी फेस भी नहीं आ रहा, मतलब अभी तक आ रहा था, एकदम गायब हो गया आते आते। मतलब स्क्रीन अच्छा। बिल्कुल ब्लैकआउट है इस समय। सर बच्चे भी शायद कह रहे हैं कि लिंक भेज दो। यार देखो, मैं ना तुम लोगों को ना एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है? ओके सर। स्क्रीन शेयर करता हूँ सर और मुझे ऐसा कुछ कुछ है। दिख नहीं रहा है एक्चुअली। ठीक है, आ तुम गया आ लोगों को गया आ स्क्रीन गया दिख सर, रहा आ है? गया। हाँ जी। देखो, मैं ना ऐसे जाता हूँ एक्यू के पोर्टल पे, और मेरे ओके को बस यहाँ से ज्वाइन नाउ का बटन क्लिक करना होता है। तो मेरे सर। पास वाकई नहीं है लिंक। देखो, शायद शायद यहाँ पे कुछ दिखे। अगर ये लिंक चाहिए, इससे तुम्हारा कोई काम बन सकता है, तो ये मैं भेज देता हूँ। हाँ मतलब जी मुझे क्या सर, दिक्कत सर होगा? शायद यही है। ठीक है, अगर मैं ये भेज देता हूँ, अगर इससे तुम्हारा काम बन जाए तो। बट क्यों पहले सर ऐसा होता था कि हम जूम पे अकाउंट क्रिएट कर रहे होते, मतलब सॉरी, जूम पे क्लास क्रिएट कर रहे होते थे, और क्लास क्रिएट करने के बाद हम भेजते थे, मतलब लिंक भेजते थे बच्चों को। बट अब वो यस ऐसा सर। है नहीं। अब मुझे भी नहीं, मेरे लिए भी बहुत सिंपल हो चुका है। बस मैं 7:55 के आसपास लॉग इन करता हूँ, एंड आई जस्ट गो एंड क्लिक दिस लिंक फॉर मी द क्लास स्टार्ट। I even don't know how the things are implemented in the back end or anyone. ओके Uh, सर। really, yeah, I'm good. I'm better. Uh, just might be my voice would be little low comparatively from previous days. So please bear with me for that today. For everyone like who all have joined, I'm not physically not in a very good state. So please bear with me for that particular thing. For my voice, it might be low. Just kindly remind me if it is low again and again, or if the voice is low for a longer time. Just let me know. I'll try to speak more confidently, like sorry, more in a high pitch. Okay, fine. Today students are quite less. Have you all become lazy or what in just 2 days vacation? Mm, okay. Mm, mm, कोई नहीं। Let's start the class. Let's start the class. कहाँ गया यार Zoom? सर, हमें I received it, Yuvraj. हमें क्लास रोल कोड की लिंक लिंक। अनमोल, 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 या एवरीवन, आई एम अवेयर अबाउट इट। ठीक है, मैं गिटहब रिपोजिटरी बनाना भूल गया था, बिकॉज लाइक आफ्टर दैट डे, आफ्टर द क्लास ओनली, आई फेल sick very badly. So today I'll make a GitHub repository, and by tonight 12 p.m. ठीक है, अब 10-12 बजे तक ही I'll make sure कि you all will receive the this GitHub repository on Discord.
and even on the WhatsApp group, I'll send it. Most probably every one of you are in the WhatsApp group, so I'll send that. Okay. And I just forgot that day, and after that I was very sick. So okay, fine. So let's start the class. Let's start. It's 8:08 and terminal. Okay. So anyone who have the joining link or the WhatsApp group link, kindly share it in the class with everyone. CD D A S L S front end. ठीक है. MK. Let me just do this. Cool. So we have done A, B, C, day 1, day 2, and today we'll start with day 3. Okay, let's make this first little smaller. We don't need that big. You please join in the above group. एक बार spam को repeat कर दीजिएगा. Divanshu, okay, I'll do that. Divanshu, for you, what I'll do na, कि I'll not explicitly go and just again explain the spam. I'll keep this thing in mind, and while discussing the entire class, I'll be in a particular moment or in a particular section, I'll introduce this, use spam, and there I'll explain it for you. Okay. That would be more insightful, I guess, rather than just taking up spam the topic and explaining. So while I'll be doing the writing the code for the today's, because everywhere we tend to repeat the previous concepts or a lot of time, isn't it? So there I'll just explain the spam part. Okay, fine. So first, as usual, I have told ki every day we will have a list of the agendas that I have in for the class. By this is like the basic HTML that is remaining for us that we have to do. So what we have on the today's class list, so you all can maybe expect by the end of the class what you all are going to take away. The first thing is the descriptive list that we were left to do in the last class. Like it was, I guess, till 11:20 we all were there, and you all couldn't do the, not you all, in fact it was me also. Then we will go and deep dive into the link, and trust me, some of you who have been using links like who have good idea have done a good research before coming to this class, and there are certain things that we'll learn generally not found in any YouTube videos or anything else. Then we will go and deep dive into the multimedia. In multimedia, we'll be going and studying all the things that will be image, audio, and video. Then we will study table. I'm pretty not sure whether after this we will have time or not, because these things, though this is looking very big time, it won't take much time. So each and every step will take 15 minutes each, 15 minutes, or maybe the first one would take 20 minutes because that's a starting the multimedia topic. After that, will take 15 minutes each. Okay. So we'll till table, we'll do the, like in table also, we'll learn all the types of things. Row spam, call spam, if you all know how things are working actually in the things, making headings and all. We will actually make a table, or like the time school routine we will make in the class, live in the class only. If we will still have time, okay, I don't want to give a false hope to you all. If we'll still have time, and then we might have an introduction to forms. Semantic stacks, we won't be able to do that. Okay, not giving any false hope. We won't be able to start the semantic tags today, though it's a very quick topic. But yeah, we'll try to introduce forms to by today's class only, and that will be to and by tomorrow, like in the first half, on like, or in the first 1 hour of tomorrow's class, we will be done with HTML, and then tomorrow only we will start with CSS. And one more thing we are having again, if I don't feel sick again, अगर मैं बीमार जिस तरह से कल पड़ गया था वैसा अगर नहीं होता हूँ, and I'm keeping a good health, so we will have a class on Saturday, Sunday also. Okay. That was the general information.
आई होप कि मैं बीमार ना पड़ूं दोबारा, इतना मतलब इतना बीमार ना पड़ जाऊं कि क्लास ना लेना पड़े, लेने की हालत में ना रहूं। तो वी विल हैव सैटरडे संडे एंड द एंटायर वीक, इन द एंटायर वीक वी विल लर्न द सीएसएस इन डेप्थ, ठीक है। सो बेसिकली आफ्टर दिस वीक यू ऑल विल बी, ठीक है, बेसिकली at the end of this week you will all will be able to do a little bit of styling, because all the websites that we have made as of now are very raw or very like very unstructured or anything else. So ठीक है, those are very unstructured websites that we have made, so using a little bit of css also. अच्छा, one more thing कि okay, good number of people. So in table, while I will be learning table, I'll be using a little bit of css, little bit. Don't need to worry for those who don't know absolutely css, okay. डरना मत, या फिर डोंट वरी, जस्ट कुछ चीजें है ना कि ऐसे मतलब ठीक है ब्रह्मास्त्र की तरह या रूल्स की तरह, इट इज फॉर इट इज, तो फॉर टुडेस क्लास ओनली. By tomorrow class, in the tomorrow class, the rest 2 hours, the last 2 hours, we'll be learning CSS entirely, because for tomorrow we will be only left with semantic tags and forms that we can complete in 1 and 1.5 hours. So we will start CSS tomorrow only, but anyhow, okay. So let's start the class. I would do one thing. सर क्या मैं कुछ मिस किया क्लास में? No, Mamta, no, you haven't missed anything. Just I was giving a very brief intro of what we will be doing in the class. I would want to do one thing. Okay, let's keep the descriptive list. Let's keep the descriptive list for the last section, because this is something that will get boring because we have already studied the list and all. So let's start with a good beginning. Let's start with a new topic. After learning linked lists, this let's start with links multimedia, because these are the very new topics for us. It will bring more how to say this, bring more energy and enthusiasm. And then this is a very simple thing. It will just take me 2 minutes, but I don't want to start something previously. Okay, let's start. So in day 3 I have index index.html. okay, गलत फाइल का नेम क्रिएट कर दिया था, index.html. Cool. So what I'll be doing now to do this particular thing, okay, to do this particular thing, I'll be hovering over index. That is the name. That is the name of the you want me. I can give it vikash because vikash.html. Okay, that is the name of a file. It has nothing to do with it. You can give your name also. Okay. Index.html is something like that we as a general practice that we do. Just for example, why we always start like in for loop when we do we just say for int I equals 0. We just like this is a very set of like a general practice that we just follow. Okay. For HTML file, we generally write html.index.html. For a CSS file, we generally write style.css. For a JavaScript file, we generally write script.js. So that is a basic naming convention that we tend to follow. It is no hard and fast rule that we all need to put HTML, sorry, index or something like that. So for example, let's take, I have taken this as because.html. So maybe okay, but if we keep it related to the topic, we will be doing helpful. Oh yeah, we can do that. So like I did in the last class for the list part, when we were discussing the list, I did list.html. Okay, because in this particular topic, I'll be using multiple concepts. So there was no specific as such specific concept that I was going to discuss. And ex. Let me just see till where we have done this. Let me just see. Okay. Okay. Cool. And in the list part, what we did, open with the live server, unordered list, ordered list, and so that was if I remember right. Yeah. So I'll copy the
exact content, and we will be making changes to this file only, just to keep a separate folder, because I'll be uploading this code on the GitHub also. So I'm just taking this the content. I'm not playing around with in the same file. Okay. Index.html. Let's paste. Okay, here. So here it's went. Our day 2 went. Okay. Day 3 will start. And let's open with live server. So here it came. Cool. Very good, very good, very good. ठीक है जी, तो देखो, for example, to do this again, कि I'll start with any other Amazon. Okay, my favorite website or something like that. So let's suppose if I'm right, कि when let's suppose iPhone 14 has been अभी iPhone 14 आया है ना, तो iPhone 13 14 तो अभी नहीं मिलेगा. iPhone 13 Pro Max. What was BR? BR was for line breaking. ठीक है, line breaking and all. ठीक है, तो you all can see now कि in this particular file, like in this particular page. Yeah. In this particular page, there are multiple links. If I just start, you can see it is going and it is just going and opening the same page, a complete, not same, complete different page in a new location or something like that. So there is something called links. Okay, please mute yourself, please guys, mute yourself. Who is this? Likita, please mute yourself, and Ramin, please mute yourself. I have muted everyone. Leave it. So first thing, so let's see links. Maybe LIN links. We are going to study about it. So देखो, it's basically you have to embed a link in your current file. So there are 2 to 3 ways you can do that. Okay. Just give me 1 second. Sorry. This was on mute. I forgot to unmute. Is it audible now? Is it audible? ठीक है. The first thing that I want to say, like I want to do, maybe let's go and see. You remember? Did you all what we all did here? The first thing. Can anyone tell me what exactly was this? If I just hover over it, Accio job is coming. Yeah, it is slow. I don't know why. I really don't know why it is performance is slow. Voice is lagging. Is voice issue with everyone? Is voice issue with everyone? Okay, let's do a quick recap, like recheck. Is it better now? Can you all hear me properly? Taking some, yeah, it's a bit of a network problem. ठीक है. Give me 2 minutes. I'll rejoin. ठीक है, I'll rejoin.
Just give me 2 minutes. For that, Yuvraj, I'm making you host so that the meeting doesn't end, and I'll rejoin then. ठीक है जी. Hello, hi. Just let me know if it is better now. Can you all hear me? Cool, cool, cool. No issues. ठीक है. Okay, okay, fine. Let's start. Let's start the class. Okay. We are losing time. So the first thing, just a quick recap. Okay, just a quick recap. Can anyone tell me what did I use here? What did I use here? This thing AJ at AJ. It is slow a little bit. I don't know why, but this is showing Accio jobs, isn't it? Okay. So what did I use? ABBR, ABBR. Very good, very good. So means you all did revision. That is an abbreviation tag. Okay, that is an abbreviation tag. Very good, very good. ठीक है जी. So now see, now what I want to do, I want to do na, I want to use here something when I am learning web dev from AJ, Accio Jobs. Okay, and what it should happen, it should be a clickable link. When someone click here, okay, when someone click here, it should go and land it to this Accio Jobs main website. Okay, it should go and land onto. You might have learned for more information, please click here. Okay, that types of thing that you have seen in your life throughout the time. Okay, you all have been using internet for a long time, so you all must have seen. For more information, please, yeah. Okay, so let's do that. So just let me quickly find where did I do this? Hi everyone, this is my first web page. I am learning Accio Jobs. Okay, I'm learning from abbreviator Accio Jobs. Here it is. The simple way to use a hyperlink or the add a link is just go here, or maybe here I would show first. Here I would show. Just use this A tag. That is an anchor tag. Okay. ABBR is the abbreviation. Abbreviation. What abbreviation is? See, when I just hover over this link, this is something that you can see. You can see it is not now. So when I'm just going on that particular section, it is showing me some details. You get more details about that you might have seen on the websites also. So this is a simple way to use a hyperlink. Okay, the code that you want to see here, it is the code. Here is the code for that. Okay, that till this part is the code for that. See it completely now. A format document. Yeah, AJ. So here it is the complete. Just use ABBR. Title is the thing that will be displayed on the as a text. Okay, that's all set.
let's go and use the first thing. The first thing is href. This is how you go in that abbreviation part. Here href is the link that you will be providing. For now, let's use it anything. google google.com, though it is not going to work. I'm just writing it anyway. And you can say CLICK, click me. Okay. Let's open the page. Can you see here it is a clickable link? It is a clickable link. Though it will not, because I have not mentioned the google.com and the proper. So first let's actually add something. The first thing will be leave it. ठीक है, इसको छोड़ देते हैं. And here at Accio Jobs, what I want ना कि add the Accio Jobs website. Okay, let's do that. Breaking. अच्छा, I have switched off the video. ठीक है, I've switched off the video. Is it fine now? Just the audio part is good. ठीक है. तो सुनो देखो, ऐसा है ना कि देयर इज अ हाउ टू से दिस, देयर इज अ नेटवर्क इशू टुडे. ठीक है, सो लेट्स कीप द वीडियो ऑफ फॉर टुडेस क्लास. आज की क्लास के लिए वीडियो ऑफ रखते हैं एंड विल डू द ऑन ऑडियो ओनली. ओके, ठीक है. देखो बहुत बढ़िया. अभी यहाँ पे करते हैं. Cool. So I want to add here. So I'll just go and add simply abbreviation here, and I'll take the website link. Okay, I'll take the website link. Control C. I'll just go here and paste. Okay, acciojob.course.m, and this A tag will end here. This A tag will end at the. Okay. For now, let's ignore the abbreviation part. ठीक है, abbreviation part को हटा देता हूँ. You might get confused. For the sake of that, अरे यार क्या हो रहा है इससे? ठीक है. A is known as the anchor tag. A is known as the anchor tag. Okay. Now see, or maybe I will write it. I am learning course from Accio Jobs. CCIO Accio JOBS Jobs. Okay. Now this is a clickable link. If you just go and click here, it is opening in a new complete new page, or like the website is being opened. Okay? It is going, because whenever you are putting a link, okay, whenever you are putting a link, you need to add the entire exact HTML page. Okay? This is one of the, I think there is no rocket science in this. This is very simple. Just use this A tag. You can add anywhere. Okay? You can add. And see here, the first thing was adding just making a clickable link. That was a click me. Whatever the text you will write here, that will become the clickable link. Okay? In case instead of this, I would have made the entire this. Okay? I would have made the entire. Can you see now the entire line is a clickable link. You just go and click the entire line, it will become a clickable link. Okay? So we sometimes want, because click here is the part. Okay? Click here is the part that we generally emphasize on web dev. Control X, Control Z. ठीक है जी. Any question here? Any question at this particular point? Any question?
नो, तो एक बार समझा दीजिए प्लीज। ठीक है ऋषभ, आई गॉट योर पॉइंट। अर्जुन, आई हैव गॉट योर पॉइंट, आई विल डू दैट। ठीक है। Others who have not responded as of now, if you have understood that, let me know. If you have not understood, you can just let me know. ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। We use combination of ABAVR and yes, Rashmi, we can do that. We can do that, and I'll do that also. ठीक है, I'll do that also right now. ठीक है, तो चलो, बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था, तो लेट्स ना मेक अ कंप्लीट न्यू फाइल। लेट्स मेक अ कंप्लीट न्यू फाइल। आई एम स्विचिंग ऑन द वीडियो। मेरे को ऐसा फील नहीं आता है पढ़ाने का जब तक मेरा वीडियो ऑन नहीं हो। आई फील लाइक यू ऑल आर कैनॉट, बिकॉज expression also matters a lot. If in case it is start lagging, let me know. ठीक है, demo.html। ठीक है, this is a normal website, sorry, normal HTML page। ठीक है, तो मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ, प्लीज शॉर्ट। ठीक है जी, ठीक है। हु इज दिस? राहुल। आई डू यार, 5 मिनट रहो क्लास में, एक काइंड से रिवीजन ही हो जाएगा। और चलो, मैंने अभी तक एंकर टैग ही पढ़ाया है, तो कोई बात नहीं। देखो, सिंपल सा वेबसाइट है, ये सिंपल सा वेबसाइट है ना, इसको ओपन करते हैं। इन द वेबसाइट देयर इज नथिंग। ठीक है, मे बी की क्लिक मी, आई वांट टू राइट हियर CLICK, क्लिक मी। ठीक है, हियर यू कैन सी देयर इज अ क्लिक मी। ठीक है, ठीक है, देखो ये रहा क्लिक मी। सिंपली whenever you go and see there is a click me button, what it actually means, you will go and click there. Clicking means it should be a clickable link, and when you click, when we will learn JavaScript and whatever we will learn on the further, there we will learn about some more attributes like button and all those things. So don't worry for now. For right now, it should be a clickable link, and means it should take me to some particular link. What I can do for that? Only simply nothing, पूरा पेज ब्लैंक है, that is I'm just going to read sorry, learn a link about that. A tag, just a here means, let me write that also. ठीक है, let me write that also. A refers to, EFERS refers to anchor tag, ANCHER, anchor tag. Okay, A refers to anchor tag. Here the href is the link of that file. href का यार full form मैं भूल गया, maybe I can just Google full form of hyper href, href in HTML, hypertext reference। ठीक है, the hypertext reference is that, it is basically the reference. What do you want to take it? ठीक है, maybe I can write for click here to go to start YouTube. अच्छा, click here to open YouTube। ठीक है, click here to open YouTube. So when I should click at the click here, it should go to the YouTube page. So what it means, basically then I'll have to attach the link of the YouTube page. How can I open YouTube? I'll just go and write here youtube.com. This is opening a YouTube. The YouTube, don't worry, I have used some extension. मेरे पे YouTube videos recommend नहीं होती है। ठीक है, तो in case की ये कोई page वेज का lagging नहीं है, I've just used something, I've personalized my desktop. My YouTube doesn't show me any video recommendation. ठीक है, I'll just copy this and put it at the relation tab, like this href। ठीक है जी, maybe it will be better now, and just go and put this text here. Click here to open, click को here to के बीच में, click here को A के बीच में लिख सकते हैं। हाँ भाई प्रियांशु, just have little patience,
मैं सारे तरीके से इसको करके दिखा रहा हूं अभी आपको, ठीक है। तो लेट्स कम हियर, नाउ यू कैन सी इट इज अ क्लिकेबल लिंक। देखो ध्यान से देखो, when I'm hovering over, when I'm hovering over, it is becoming a type of a clickable link. It can show now it is something like a pointer. Now it is a clickable, ठीक है। And now it is not only that. Now when I'll click here, YouTube opens, boom, खुला। Now maybe किसने क्या नाम था इस भाई का, प्रियांशु। प्रियांशु ने एक बहुत ही अच्छा पॉइंट किया, ठीक है, कि व्हाई नॉट, दिस इज माय, आई विल गो टू माय प्रीवियस, व्हाई टू पुट दिस क्लिक हियर टू ओपन द YouTube, all those things, ठीक है। I just want this particular part, only click here part, okay। बस इसको करते हैं इतना को। तो it we can just go here and simply use the a tag, maybe a tag, and not basically like that, cl I click here to open, not Facebook, google.com, और open not google.com, open google, ठीक है। So right now I want to just put like use the anchor tag at just click here part, nothing, कोई दिक्कत की बात नहीं, just go and use an anchor tag, ठीक है। एंड ये एंडिंग ब्रैकेट वाला जो है ना, एंडिंग टैग जस्ट क्लोज इट हियर ओनली, ठीक है। नाउ ओनली ऑल द, सो व्हाट इज द टेक अवे पॉइंट, व्हाट इज द टेक अवे पॉइंट। ओके ठीक है यार, वॉइस ब्रेक हो रहा है बहुत ज्यादा वीडियो ऑन करने से, तो वीडियो ऑफ कर देते हैं, कोई बात नहीं। So what is the takeaway point is कि only the text that is between the both the closing and the opening anchor tag will become the clickable link, ठीक है। तो ये रहा मेरा पहला, ठीक है। आई होप दैट मेक सेंस, ठीक है। इसी के अंदर आई फॉरगॉट द नेम, किसी लड़की ने या किसी लड़के ने पूछा था अभी रिसेंटली, मतलब रिसेंटली क्या मतलब कुछ देर पहले, 2-4 मिनट पहले, कि कैन वी यूज द एब्रिविएशन टैग, can we use the ABBR tag inside this anchor tag also? Can we do that? Yes, we can do that. Let's see how. Using ABBR tag, INSI, the inside anchor tag, ANCHER anchor tag. So anchor tag is used in those buttons where we connect the owner of the website on Insta and Facebook tags. Yeah, yes, ठीक है जी। देखो सिंपली एंकर टैग आई यूज्ड, ठीक है। नाउ ध्यान से देखना कैसे, मे बी इस बार भी ना मैं गूगल को ही ओपन करवाना चाहता हूँ, ठीक है। और मे बी यूट्यूब, चलो इस बार दोबारा से यूट्यूब ओपन करवाते हैं। लेट्स मेक इट ओपन यूट्यूब, तो ये रहा यूट्यूब, ओके। देन स्टेप बाय स्टेप समझना, a lot of students get confused here. Here I want to make the text that is UYT, okay। Let's see, suppose I'm putting YT, and here maybe I'll use a break tag, okay, for this. So here it is YT, okay, BR, ठीक है। देखो ये रहा YT। Now what I want to do, I want to abbreviate this text, ठीक है। मेरे को ये टेक्स्ट को एब्रिविएशन करना पड़ेगा, तो अब मेरे को एब्रिविएशन भी यही लगाना पड़ेगा फॉर दिस text only. Sometimes what people do, what students at the very beginning level, the very best beginning mistake that they do is they go and put the abbreviation tag inside the anchor tag. That is wrong. This is the closing tag, ठीक है। देखो इसको अब ध्यान से देखो, whatever you write inside this opening and the closing bracket will become the text. Now you want to abbreviate this text. आप इस टेक्स्ट को एब्रिविएट कराना चाहते हो, isn't it? हाँ या नहीं? ठीक है जी। तो यहाँ पे ABBR टैग लगाना पड़ेगा, ABBR, ठीक है। ये रहा आपका ABBR टैग, और यहाँ पे लिख दो मान लो YU
tube, YouTube, and just put the closing after this YouTube. Okay, now you can see, or maybe I'll take this particular thing. प्रियांशु, इट इज सिंपली देखो, कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है प्रियांशु, ध्यान से going and hovering here. So let me rephrase this. ठीक है, can you see this प्रियांशु? YouTube, a well written YouTube. So that is for this particular text, it will provide some insight. For this particular text, it will provide some insight. That is what the abbreviation tag is being used for. ठीक है, written on title showing, and yes, that whatever is written on the title is showing. If we use list tag and after that we use these links tags, is that work? Yes, and it works, and we will be doing that also. अभी हम वो भी करेंगे. Also show RJ code. I think can you just ask me what code you want to see? Like it's that's all here, or maybe I'll do this for my document. Here it is. ABBR. Here it is, the complete code. ठीक है? Should I need to make handwritten notes or not? Priyanshu, I have said this multiple times in the class. All those students who will be making the handwritten notes, ठीक है, on paper and pen, you all will suffer a lot. ठीक है? I have no interest in being a good bhaiya to you all. I want to be a good mentor to you all. So you all will suffer, whoever will be taking the. Rather always write these comments. ये comments क्यों बनाए गए हैं? It is the subject web development. So learn via developing the things. ठीक है? नहीं तो फिर आप वैसा हो सकता है, कॉलेज का एग्जाम पास कर सकते हो, ये नहीं पास कर पाओगे. H1 is an anchor tag. I tried H1 in anchor tag and tag it worked. Yeah, it will work. It will work. See all those things. In case you can add here H1 tag also. Who said it won't work? Let's see, it will work. Abbreviation and देखो H1 बन गया. It did 25. Aisha, okay, Aisha, देखो, this is a like anchor tag where I want to access like this YouTube video. Whenever I want to click this YouTube link, it should take me to the YouTube homepage. ठीक है? It should take me to the YouTube homepage. So I have just used the YouTube absolute link here, website link. Now this is the text part. Now all the things. I wanted to abbreviate YouTube link, so I have used the abbreviation tag. After that also, I wanted to make it a heading section, so I've used a heading tag also for that. Is it clear, Aisha? Okay, cool. So let's see one more type. Okay, let's see one more type. It is not that you can only link the multiple different files with that. ठीक है? ऐसा नहीं है कि you can just link a particular website or something. ठीक है? You can also link a different HTML page. You can also link a different HTML page with the same in a HTML page also. ठीक है? That is also what you can do. And let's see here how we can do that. Let's see. ब्रेकिंग, अरे यार ये जैसे ही वीडियो ऑन करता हूँ वीडियो, ठीक है छोड़ो, leave it. Yeah, linking, 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 ANOTHER, another HTML page in a HTML page.
change the color of the link part. Yes, Nikhil, we can do that. We can do that. And don't worry, we can do that. Basically, when I'll be writing CSS in the next class, or probably the next class only, we will start. There, I'll be teaching you about that also. We can definitely do that. We can also make it like when we will link, we can make it multiple colors. Like when we will hover over that, when I will take the mouse, we can add a different color. When I'll remove when I'll click the link, it will become different color. So we can do that. We will not only we can, we will be doing that, all those things. Okay. So let's come. Let's see the another estimate. So basically, देखो, in your entire so the complete was anchor tag in ABBR. ठीक है जी, देख लो. अच्छा देखो, अभी फिलहाल I want to say something for in your entire life, basically in your development life, it is not that you'll make only one page. ठीक है. Just for now, always I take the example of this Amazon. इतना अच्छा प्यारा वेबसाइट है ना Amazon का. ठीक है. Do you think this entire HTML website, this entire HTML, the entire web page is made up of only one page? How many of you think that it is made up of only one page, or there are multiple pages in the inside this? There are multiple pages, isn't it? Yeah, I'm not that happy with the class today. I'm really not keeping a good health. Still, I'm taking, trying to put my best, but you all don't participate in the chat section. Like only 6-7 students. Yuvraj, Karthik, Abhishek, Ayushi, and all. Very few students participate. ठीक है. A very good example for that would be, let's say I started this, I click this. ठीक है. It is taking me to a different page. Maybe this is a complete different page. Okay, Harshal, no issues. ठीक है. So yeah, sure है यार. देखो, but there are multiple pages, and all those pages are interlinked with each other. ठीक है. Okay, cool. ठीक है जी. देखो, तो what we can do in our development, it is for sure कि we will not be working or only with a single page. ठीक है जी. Clicking different page is coming. Yes, Devashish. ठीक है. Now I will go on, click here to go to the previous page. So I'll make click. Maybe I'll use a paragraph tag. ठीक है. Click here to go to the main HTML page. HTML page. ठीक है. Here is our document. I'm not able to anchor tag, but not to do execute anchor tag with ABR. Arjun, ठीक है. I'll repeat that part. Give me some time. I have taken note of that. I'll repeat that part. ठीक है. But मतलब काफी देर से बस वही सेम चीज रिपीट कर रहा हूँ, तो it will become very irritating for some people. So have faith on me and leave it to me. Within that class, I'll repeat it in somehow. ठीक है. अब अगर दोबारा ऐसे किया तो कुछ बच्चे एकदम हो जाएंगे, भड़क जाएंगे कि बहुत ज्यादा रिपीट हो चुका है एक ही थिंग. बट हैव फेथ, आई विल डू दैट पार्ट. तो देखो यहाँ पर ना मैं कहता हूँ क्लिक हियर टू गो टू द मेन एचटीएमएल पेज. मेन एचटीएमएल पेज इज माय दिस वन पेज. ठीक है. index.html, दिस वाज माय मेन पेज, और दिस इज माय मेन पेज. ओके. ठीक है. तो देखो, ये रहा मेरा मेन पेज. मैं इस पे जाना चाहता हूँ बेसिकली, राइट. तो ये रहा मेरा. व्हाट आई कैन डू ना, सिंपली जो मैंने अभी तक जो करता आया हूं ना, कुछ नहीं करना था. बस ए रेफ, ठीक है, एच रेफ एंड क्लिक हियर के पास जाकर के लगा दो वी. ठीक है. तो ये रहा मेरा पेज. Here it is.
click here to become to go to the main page. अभी देखो, अभी मैं क्लिक कर रहा हूं, this is a clickable link, but it is not taking anywhere. Why? Because it is not linked to somewhere. Still it is a clickable link. You can see, try to visualize this. ठीक है, यहां पर ध्यान देखना, यहां पर हो रहा है क्लिक, क्लिक तो हो रहा है, it is link is created. अरे I will be doing that, I don't worry Sindh, of course we will be doing that. अभी तक इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि but still the link is created. Now to do that I want to take the previous thing. I can just go on, and this is a way to put the relative reference. It will take the files inside the inside this folder only. I can just go and take to this particular page. ठीक है, now I have linked. Can you see I have now went to a complete different web page, a HTML file only. देखो वैसे भी ना वो वेब पेजेस भी जो हम यूज कर रहे थे, ठीक है, द गूगल डॉट, दैट इज ऑल्सो HTML. एट द एंड ऑफ द डे दैट इज a HTML फाइल. ठीक है, द वेरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ वेबसाइट इज द HTML फाइल, इजंट इट? एंड उसके बैक एंड पे, सर्वर पे, डेटाबेस पे क्या हो रहा है, दैट इज ओके, बट स्टिल द google.com दैट वी आर सीइंग, google.com, ये एक HTML फाइल ही है. ठीक है, तो by this way I can, sir, we can copy a link from the server, live server. I did it and it worked. Yeah, you can do that also. Certainly there are, देखो basically ना, you have to just attach the link of the previous pages. ठीक है, you have to just attach the link of the previous pages wherever you want to. So this was, now a quick recap, like a quick check. How many of you are clear till this point? ठीक है, how many of you are clear till this point? If anyone have any doubt, then just bluntly ask me. Forty students, 18 replies. Vamshi, sorry, I'm really sorry if I'm taking your name wrong. Vamshi Sarma. अभी इसका नेक्स्ट पार्ट है, मतलब ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इसके नेक्स्ट जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो यही चीज है जो भी आप बता रहे हो, जो आपका क्वेश्चन है वही हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है यार, एक one thing I want to say to few, a lot of you are writing this on to me on the private chat also. ठीक है यार, देखो, this is a class. ठीक है, there are some students, just give me 2 minutes, I really want to talk to you all. ठीक है, बात करना यहाँ पे बहुत जरूरी हो रहा है, because I know whatever you are saying, I know about that, but take it to it, I want to show you a different perspective. The perspective is that, think it of it as a boat. ठीक है, एक नाव की तरफ कंसिडर करो. In that boat ना, not everyone is a very good swimmer. I'll address this. ठीक है यार, अभी मेरे को बस 2 मिनट आप लोगों से बात करनी है कुछ. ठीक है, चलो मैं वीडियो ऑफ करके बोलता हूँ. आवाज आ रही है क्लियरली सबको? आवाज आ रही है क्लियर सबको? ठीक है, देखो आप लोगों में से कुछ लोगों का कंप्लेन है. ठीक है, some of you have a complaint, and please don't think that I'm ignoring or I'm taking it negatively. I know what you are feeling. I have been to a class where I was the smartest guy too also. ठीक है, but consider with your friends also. Okay, there are some students who are from like completely non-CS background.
like who have not studied computer science in their entire life, ठीक है, who are non-engineering students also. I am pretty sure there would be some students, here who are from non-engineering background also, right? For them it would be, I cannot assume कि यार मैं एक बार बता दिया उसको नहीं, उसको समझ में आ गया, ठीक है। इफ क्लास में ना मेरे को, मैं वो लेके मुझे चलना होगा कि क्लास का लास्ट 5% बच्चा भी सीखे क्लास के अंदर। आई नो कि देयर आर स्टिल स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट और था, ही हैज मेड अ बोर्ड का वेबसाइट का क्लोन ही बना दिया, ठीक है। ही दिस पर्टिकुलर क्लास जो आज मैं पढ़ा रहा हूं, एंकर टैग लिंक करना, दैट वुड बी वेरी बोरिंग फॉर हिम, आई कंप्लीटली नो दैट, ठीक है। बट एक अपने उन दोस्तों के बारे में भी थोड़ा सोचो जो एकदम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिनको कुछ भी नहीं पता है, वो रियली में ये कंफ्यूज हो जा रहा है कि ये एबीबीआर टैग क्या है, इसके अंदर कैसे हो गया। किसी के लिए, मेरे लिए ना बस इतना कह देना बहुत आसान है कि यार देखो इसके अंदर ये वाईटी है, इसको एबीबीआर टैग यूज कर देंगे तो एब्रिविएशन हो जाएगा, ठीक है, इसके बाहर हम H1 टैग लगा देंगे तो हो जाएगा। ये कह के मैं 2 मिनट में हट सकता हूं, मैं जा सकता हूं, कोई इशू नहीं होगा। नहीं समझ में आया भाई तो वीडियो पढ़ लो। क्या, बट क्या इससे आई वुड बी अ गुड टीचर, और क्या उस स्टूडेंट के लिए जस्टिस होगा? यार वो भी इक्वली पैसे देकर आ रहा है, ठीक है। दैट्स ईच एंड एवरी स्टूडेंट हियर इज पेइंग अ लॉट ऑफ एफर्ट। कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं जो दे आर वर्किंग एज अ नॉन टेक्निकल जॉब। एक दो बच्चों के मैसेज आए थे व्हाट्सएप पे, भैया आई एम फ्रॉम अ कंप्लीट नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड एंड आई एम वर्किंग आल्सो बिकॉज आई हैव टू सपोर्ट माय फैमिली, एंड ही इज पुटिंग हिज एफर्ट 8 to 11, putting his energy, time and all. Will it be justice with him or her if I just don't clear his doubts in the class? Agar nahi hoga, agar if I don't do that, what is the use of the class? What is the use of the live class? YouTube पे वीडियोस नहीं पढ़े हैं क्या? जरा देखते हैं। क्या हमें, अगर मुझे लिंक नहीं, एंकर टैग के बारे में पढ़ना है और मे बी लेट्स से ANCHER एंकर टैग इन HTML, क्या YouTube पे वीडियोस की कमी है? स्क्रॉल करते जाओ, खत्म नहीं होगा। ठीक है, और यार ना एक बार ना आप अपने उस स्टेट को याद करो, ठीक है, आप अपने एक बार उस स्टेट को याद करना व्हेन यू वेर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। आपको भी समय लगा होगा, बिल्कुल लगा होगा। I can tell you one story, one of my like a very, when I was in first year, in the first semester, I went to a physically class for learning coding, ठीक है। For learning coding, I went to a physical class, classroom, कोचिंग सेंटर्स होते थे दिल्ली में, वो लोग फिजिकली क्लास पढ़ाते थे, क्लास में बुला के पढ़ाते थे, मैं उधर गया था। इन दैट पर्टिकुलर क्लास ओनली देयर वर स्टूडेंट्स जिनका एक दो कोडिंग कंपनीज में निकल चुका था, दे वेर वर्किंग ऑल्सो, वो कुछ जॉब वॉब करके आए थे। मैं जहाँ पे सोच रहा था ना कि यार ऐसा कुछ हो सकता था, हो सकता होगा, बेसिकली दैट आई एम सेइंग अराउंड DSA, डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम। आई डिड कोचिंग फॉर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम ओनली, ठीक है। तो वो कर देते थे, कोड वर्ड कर देते थे, मैं डिमोटिवेट हो जाता था। देन माय मेंटर एक्चुअली गाइडेड मी, ही सेड मी कि डोंट कंपेयर विद देम, दे आर ऑलरेडी लर्न, ठीक है। मे बी आप डे 60 के होगे, बट कोई डे 0 पे भी हो सकता है यहाँ पे। एंड एज अ क्लास इट इज आवर कलेक्टिव ड्यूटी, नॉट मेरी ही, हमारी कलेक्टिव है, हम सभी एक साथ जाएं, ठीक है। वंस अगेन टू ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर सेइंग, I have no intention to offend you. I can feel what I know very well what you are feeling. ठीक है, but bear with me for just one more week. ठीक है, it will be a quick revision part also. So that would be till the time we are doing CSS, till the time we are doing learning CSS. उसके लिए उस तक में थोड़ा सा करो, the moment we will start catching up with bootstrap and then JavaScript, we'll be all good to go,
ठीक है। I know कि for some of you the class is going very slow or you might get boring, the same thing is repeating again and again। मैं ये एंकर टैग कब से रिपीट करे जा रहा हूँ, जो 15 मिनट में पढ़ाया जा सकता है। बट यार मतलब क्लास में पढ़ाने का मतलब ही होता है कि लाइव क्लास का मतलब ही है कि क्लास में बच्चे का हर डाउट सॉल्व हो जाए, ठीक है। दैट्स व्हाई एवरी एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द थिंग आई सेड कि डोंट कॉल मी सर, डोंट कंसिडर मी एज योर टीचर, कंसिडर मी एज योर मेंटर, एज योर बिग ब्रदर। क्योंकि यार भाई से तो पूछ सकते हो, भाई से तो कुछ पूछ सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो कितनी भी बार। अरे नहीं समझ में आया एक बार और बता दो, सर से पूछने में डर लगता है, बड़े भाई से हमेशा पूछ सकते हो। तो वंस अगेन सर्वर वाला ये कॉन्सेप्ट हटा लो, कंसिडर अपने आप को स्क्रीन के इधर बड़ा भाई ही पाओगे हमेशा। ठीक है जी, क्लास स्टार्ट करें। क्लास स्टार्ट करें, बहुत हो गए। एंड वंस अगेन सॉरी यार, किसी को हर्ट नो वन, नो आई हैव नो इंटेंशन टू हर्ट एनीवन, यू ऑल आर सो माय स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं क्या बता रहा था, हम क्या पढ़ रहे थे, या how we can link a different HTML file, how we can link a different HTML file from one file। ठीक है, हम एक HTML फाइल को दूसरे HTML फाइल से कैसे लिंक कर सकते हो। तो आई होप कि ये यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, तो बस जाकर के एब्सोल्यूट रेफरेंस दे दो तो ये खुल जाता है। ठीक है, नाउ देयर इज वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, वन मोर एंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, एंड ये इस वाले पार्ट में ना बहुत ध्यान देना, ठीक है, बहुत अच्छे से। इसके लिए मेरे को प्रीवियस फाइल में जाना पड़ेगा, बट ठीक है, नॉट दैट। ठीक है, के लिंकिंग DIFFERENT डिफरेंट SECTION सेक्शन ऑफ वेबसाइट बी WEBSITE वेबसाइट। ठीक है जी, तो हियर इट इज, हियर इज द वन। ओके, व्हाट I basically mean linking different section of a website. Let's come here and let's open Wikipedia. WEKIPEDIA, Wikipedia. And or maybe I can write Virat Kohli, VIRAT, Virat KOLHI, Virat Kohli Wikipedia. ठीक है जी, let's see. Can you see one thing? Here are a list of, there are a list of items. If I just go and click, एक चीज पहले ध्यान देखना, ध्यान दो, this is an entire one web page, this is an entire one web page. Question, I'll have very quick questions and I want everyone to participate. Is this a single web page? It's not a multiple web page ना, multiple web page नहीं है, ये single web page है पूरा का पूरा, the entire front। ठीक है, cool. Now see, what I'm doing is when I'm clicking, I can go on a different section, on a particular different section, same web page ke, on a same web page I'm going on a different section. If I just go and click on the career summary, here is the section, it was already, it is not that it is a different website, ये कोई different website नहीं है, ठीक है, it is all together a complete sorry, it is the only existing website, I'm taking to a particular section of that website। ठीक है, just let me know angle with multiple पेज पर बाउंसिंग करना आएगा। यस यस युवराज, यू कैन से। ठीक है, तो जस्ट अ क्विक क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट एग्जैक्टली you want, sorry, what exactly we are going to do? How many of you have understood? Or like you are still in confusion कि what exactly we are going to do? ठीक है, क्योंकि देखो कोई भी ना, in DSA I mainly used to say that if here is anyone from batch 19, if anyone is here from batch 19 or batch module 1, if he have studied DSA with me, you know कि he or she must be knowing कि I divide, I say every time there is a three problem of the, what of the problem, कि problem में करना क्या है,
what of the solution, how, ठीक है. And there are some sections also where we need to discuss why also, ठीक है. बेसिकली मैं प्रॉब्लम में करना क्या है. कंटेन डिफरेंट कैटेगरी, यस 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 यस, ठीक है. अच्छा, फॉर दैट यार गिव मी 2 मिनट्स. मेरा गला सूख गया है बोलते बोलते, और मेरे को पानी पीना होगा, तो मैं पानी पी के आता हूँ. 2 मिनट, जस्ट बी पेशेंट. ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट. ठीक है, तो देखो, बेसिकली इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शंस. ठीक है, यू ऑल कैन हियर मी, कैन यू ऑल हियर मी? ओके ओके ओके, कूल कूल कूल. ठीक है जी, तो देखो, दिस इज बेसिकली अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शंस. ठीक है, अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शंस वेयर यू आर गोइंग टू अ section of the website. ठीक है, not website, website would be a wrong word to use. A section of the web page. ठीक है, you are going at a particular section of a web page. Okay जी, very good, very good. So what basically means is if we can divide our entire website or web page, we can divide our web page in multiple sections. ठीक है, we can divide our web page in multiple sections and we can drop down to each sections however we need it. ठीक है, I'll come to that. अच्छा, not come to that, अभी ही बता सकते हैं. देखो यार, आपने सेक्शन को इस तरह से समझो कि मान लो ये एक पर्टिकुलर सेक्शन है. ठीक है, सेक्शन यार मतलब समटाइम इट इज वेरी हार्ड टू कि किसी को ये बताना ना कि गाय क्या होती है. हाउ वुड यू एक्सप्लेन दैट? ठीक है, दैट इज ओ यार, ये वीडियो जब भी वीडियो ऑन करता हूँ, ठीक है, एक्सप्लेनिंग समवन दैट्स वेरी सिंपल यार, वेरी सिंपल. हाउ शुड आई? अच्छा, लेट मी सी, लेट मी ट्राई. ठीक है, देखो, this is one section of the website, not web page, not website, web page. This is one section, this is another section. मतलब यार पार्ट. ठीक है, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट. मैंने इस वेबसाइट को 3 पार्ट्स में बांट दिया. और चलो मान लो कि क्लियर ऑल ड्राइंग, maybe I have divided this particular web page. ठीक है, all the thing that you can see in the screen in 3 parts. ठीक है, this is one part, this is one part, this is the second part, this is the third part. This is what I have divided. Okay, I have divided. Now this division is called section. Part of the page, yes, part of the page. Okay, you understood? Okay, cool, good. कभी कभी ऐसा डाउट आ जाता है बच्चों का, लाइक
those these I call not called I call these very innocent doubts. मतलब ऐसा लगता है मतलब यार क्वेश्चन तो बहुत सही है यार इसका, बट इसको बताएं क्या. Sometimes these innocent doubts comes, there I feel like clueless. Like you know what it is, you also know the other person knows, but you just need, you're missing out of the words how to exactly say. It's okay. अरे देखो अभी हम देख लेंगे, अभी देखेंगे, ठीक है कि क्या कर रहे हैं. तो अपने मेन वेब पेज पे चलते हैं. मेन वेब पेज क्या आ रहा है मेरा, HTML, नॉट डे 2 में नहीं, डे 3 में. दिस इज आवर HTML. तो लेट्स इन सबको बंद करो यार. ठीक है, तो ओपन विथ लाइव सर्वर. ठीक है जी. तो देखो, फर्स्ट लेट मी डिफाइन कि व्हाट एग्जैक्टली आई विल बी डूइंग. ठीक है, तो देखो, आई कैन से दिस इज माय वन पार्ट. ठीक है, दिस इज माय वन पार्ट, दिस इज माय वन पार्ट. ठीक है, this is my one part of the, and this is the another part. ठीक है, so I have divided my web page. How to clear this, eraser कहाँ गया eraser, ये रहा. ठीक है जी. तो देखो, I have actually divided my web page in 3 or 4 different parts. ठीक है, just undo. अरे अरे एनोटेट पे नहीं काम करता है, एनोटेट पे काम नहीं करता है वो, वेबसाइट पे काम, मतलब गुड नोट्स बाय नोटेटिंग पे काम करता है. when you are writing on the main screen or like annotating on the screen, that don't work. ठीक है, चलो यार देखो आ जाओ. तो बेसिकली I will divide it in the different sections. ठीक है, so when I will divide it into different sections, so I want a navigation. कि मैं इधर क्लिक करूं तो आ जाऊं. तो एक बार ना अपने विराट कोहली भैया के वेबसाइट पे, विकिपीडिया पे दोबारा जाते हैं. तो व्हाट टू डू दैट, व्हाट टू विराट कोहली भैया विकिपीडिया. ठीक है, अब मेरे को ज्यादा एनर्जी नहीं लगाना चाहिए. just tell me how this particular section, this content section is being made up of. Just tell me that. Can you just tell me the basic layer, basic HTML of this content? Kiran not expected this, yaar. Kiran not expected this. Harshal, why are you on doubt? नहीं युवराज, नो युवराज, यू आर रॉन्ग. और कौन कौन गलत जवाब दे रहा है? निखिल, यू आर रॉन्ग. युवराज, यू आर अगेन रॉन्ग. अरे बेसिक HTML, I'm asking basic HTML. What is the structure of this HTML? This is a list. Can't you all see list? और इतने लोगों ने पहले कमेंट में बता दिया, said. ठीक है. Yes, Kiran has given the exact answer, ordered list. Actually, some people have also said, कुछ पहले लोग भी बोले थे, if I'll take the name, Kalit, यार I'm really taking your name, I'm just taking your name wrongly. Kalitrik, I can't pronounce that. Kalitrik, ठीक है. कुछ और लोगों ने भी सही नाम दिया था. Yeah, okay, this is the same person. Okay, रिक्की कलिता, रिक्की. Okay. मैं तो यार तुम्हारे जीमेल आईडी से नाम पढ़ रहा था, तो ठीक है. रिक्की.
list with anchor tag. Yes. Now Yuvraj has given the proper answer. These are our list. ठीक है. तब देखो, the first basic structure of this is the first basic structure of this file. यार देखो, जब तक ना अपन ये वाला नहीं करेंगे तब तक आज डिनर ब्रेक नहीं लेंगे. इसको करने के बाद ही डिनर ब्रेक लेंगे. ठीक है, बीच में छोड़ के नहीं जाएंगे. इसके साथ गद्दारी नहीं. ठीक है, देखो, और ज्यादा नहीं लगेगा, 10 मिनट में हो जाएगा. अगर अच्छे से हम करें तो 10 मिनट में हो जाएगा. लेट्स टेक द फर्स्ट थिंग इज कि दिस इज अ लिस्ट. ठीक है, लिस्ट. दिस इज अनदर, दिस इज अ ऑर्डर्ड लिस्ट. तो यू कैन से एन ऑर्डर्ड लिस्ट, व्हाटएवर इट इज. ठीक है, ऐसा स्पेसिफाइड नहीं है कि we will have to always take an ordered list. There is no as such compulsion for that. ठीक है, there is no as such compulsion. So this is a list inside a ordered list inside a ordered list, ordered list inside a ordered list. So remember the last class, list inside the list, list inside the list. ठीक है, cool. तो ये रहा. Now let's come to the another part. All these lists, all the text, all these text, this text, this text, this text, all these text are a what? क्या है, जल्दी बताओ. All these are anchor links. Yes, very good. All these are red वाले में point होते हैं. ठीक है. Very good. I didn't understand. मतलब I actually didn't understand your context. मतलब is it going too fast for you? ठीक है. तो देखो, all these are a list. Sorry, all these are links. वॉइस स्क्रीन ब्रेक हो रही है. ठीक है यार, मैं समथिंग बियॉन्ड माय लिमिट्स. ठीक है, समथिंग बियॉन्ड माय लिमिट्स. चलो ठीक है, काम मेन चीज पे आते हैं. ठीक है, ध्यान इधर आते हैं. तो ये रहा, here it is a list of link. It include. तो फर्स्ट, अच्छा, ये चीज हो गया कि मेरे को एक सेक्शंस ऑफ लिस्ट बनाने होंगे. तो मेरा मेन वेब पेज कहाँ गया. ठीक है, तो I will be making these sections again. एक और बार, just once more. I'll be making these sections. These sections. Okay. And I have to create here list. A list of 4 things. 1, 2, 3, 4. When I will click this, it should come to this. This should come to this. This should come to this. This should come to this. ठीक है, मेरे को ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा. अच्छा, undo is working. सही है यार, कोई बात नहीं. मेरे को लगा था इस पे काम नहीं करता. तो मेरे को इधर पहले 4 लिस्ट बनाने पड़ेंगे. और तो सबसे पहले the first thing that we will learn is we will be just dividing the entire web page in sections. ठीक है, we will divide the entire web page into the section. तो अभी के लिए how to do this, इसको थोड़ा फुल करते हैं. ठीक है, तो मेरा फर्स्ट सेक्शन क्या था, और जरा इसको भी फुल कर दें. तो मैं इधर ऊपर स्टार्ट. ठीक है, ये रहा इधर पे. ठीक है, इधर पे मेरे को आते ही हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग पेज. ठीक है जी, ये रहा. इधर आकर के मेरे को यहाँ पे 4 लिस्ट बनानी थी. ठीक है, क्योंकि मेरे वेबसाइट का मेन 4 पार्ट आई डिवाइडेड. 1, 2, 3, 4. ठीक है जी, ओके, वेरी गुड. टू डू दैट we will be using a tag called navigation, nav tag. ठीक है, this is nothing but navigation.
Navigation means what? Navigating you to the different parts, navigating you to the different sections, as simple as its name it is. ठीक है, Navigatation, navigation. ठीक है, we call it navigation. ठीक है, we call it nav tag, nav tag, navigation tag. ठीक है, in the navigation section we will be making some list. ठीक है, तो मे बी चलो अनऑर्डर्ड लिस्ट ही बना लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. There are some list, all the list we will be having some list items. ठीक है, तो first SECTIO and first, not section यार, ऐसे नहीं, first part. ठीक है, ऐसे ऐसे बनाते हैं, सिंपल सा. ठीक है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट. फर्स्ट पार्ट SECOND, सेकेंड पार्ट THIRD, थर्ड पार्ट, एंड FOURTH, फोर्थ पार्ट. ओके, थोड़ा वेबसाइट पे चले देखें, वेबसाइट पे चल के देखें कुछ हमारा हुआ है. अच्छा, मैंने कुछ गलत किया क्या? अच्छा यार, मैंने ना इसको ऊपर, इसके भी ऊपर कर दिया, तो यहां से हटा करके हॉरिजॉन्टल रो और यहाँ पे लिखना है बेसिकली. ठीक है, फ्लो में आदमी जो उसमें होस्ट हो ही देता है. UL और OL लगाएंगे. हाँ, ये मतलब तो हमारी मर्जी है, कुछ भी लगा सकते हैं. और अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट. ठीक है जी, तो ये रहा. हियर आई हैव सम लिस्ट. ठीक है, विराट कोहली भैया के वेबसाइट की तरह हमारा कुछ कुछ तो आ रहा है. ठीक है, कोहली भैया की वेबसाइट की तरह हमारा कुछ कुछ आ रहा है. लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, सिंगल लिस्ट, वैसा कुछ आ रहा है. ठीक है, मतलब ऐसा लिस्ट मेरा बन गया. नाउ द थिंग इज यार, द फर्स्ट थिंग इज, वो तो छोड़ो, ये तो क्लिकेबल लिंक्स ही नहीं है. These are not links, these are just simple text. Okay, so let's go and make this. This is a text ना. A बना दो और put this in the here. ठीक है, now how will you read this? मैं जानबूझ के ये स्पेस सेपरेट कर रहा हूं. दिस इज अ लिस्ट आइटम. ध्यान से देखो, मैंने क्या नाम था यार, मैं भूल गया तुम्हारा नाम. आई थिंक अरुण था, अरुण या अर्जुन. ठीक है, तुमने पूछा था. चलो देखो ध्यान से, ABBR टैग वाले को, तुम्हारा यहाँ पे थोड़ा रिवीजन हो जाएगा. ठीक है, देखो, दिस इज अ लिस्ट आइटम. द लिस्ट आइटम, द आइटम इन अ लिस्ट, और यू कैन से द आइटम इज अ क्लिकेबल लिंक, or you can say in very technical term, this is a list item of an unordered list, and the content inside the list is a hyperlink. ठीक है, the text of that hyperlink is the first part. ठीक है, in the last line there is the first part there. In the list this is the first part there. There is the first part there. Yes. ठीक है, just a quick check. Any one of you are confused here at any particular point, or any confusion here? ठीक है जी, ठीक है. तो लेट्स डू द सेम, लेट्स डू दैट टू द ऑल. तो मैं थोड़ा सा क्विकली कर देता हूं. ठीक है, मतलब सेम बात को दो बार रिपीट करके कोई फायदा होगा नहीं. मैं बस इस सेकंड पार्ट को कट करके मैं बस बना दे रहा हूं. ठीक है, यू ऑल आर गुड गर्ल और गुड बॉय, यू नो व्हाट आई एम डूइंग. ए टैग, जस्ट डूइंग सम कॉपी पेस्ट, मतलब थोड़ा बहुत कोड को इधर उधर कर रहा हूं और कुछ नहीं. ए टैग, फोर्थ पार्ट, ठीक है जी. फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, कैसे प्रिपेयर करूँ यार. थोड़े से ऐसे क्वेश्चन को ना, मतलब एग्जाम कैसे प्रिपेयर करें, इंटरव्यू तो लास्ट मिनट में. ठीक है,
लेट्स बी रेस्पेक्टफुल टू द पीपल्स टाइम। आसान नहीं है कि नौकरी करके भी क्लास अटेंड करना। लेट्स बी रेस्पेक्टफुल टुवर्ड्स देम। Is the voice issue still the same? Is the voice issue still the same? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके 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 गुड 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 गुड। ठीक है जी ठीक है ठीक है ठीक है। तो here now you can see it, all these are clickable links, so I have generated some clickable links. I have generated some clickable links, isn't it? Yes or no? All these are clickable links. Yes. Okay जी, okay okay, very good very good very good, simple simple। ठीक है। Now the thing is what is left, ये लिंक को मैं क्लिक करूं और ये एक सेक्शन पे लेके चला जाए, बस मेरे को इतना ही चाहिए था। Isn't it? Yes or no? मुझे इतना चाहिए। तो I have to divide. Now we can, maybe I can again say now I have to divide my webs. I have to, yes, I have to divide my website into the some sections. Navigation tool will take to the nav, ठीक है, navigation tool will take to that parts। ठीक है जी। तो अब आते हैं, तो मेरा फर्स्ट सेक्शन जो है, वेबसाइट को देखते हैं। वॉइस ब्रेकिंग is voice breaking for everyone? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। let's move to this, the first section starting here। ठीक है यार, ठीक है ठीक है ठीक है जी ठीक है। तो देखो, the first section starting here, let's figure out what I am learning today। ठीक है, तो it is as simple as it is, just go and write SECTION section। ठीक है, starting tag, start in tag। ठीक है, and where is my first section ending? To do list, let's see where I would like to visit। ठीक है, इधर आके खत्म होता है। let's see where I would like to visit। ठीक है, ये रहा मेरा कंट्रोल V। ठीक है, if I just go and format the document, you can see, now you can see very clearly all this text in this particular section। ठीक है, ये रहा मेरा section 1। I am writing something, please, to all those things, people who don't know CSS or anything of that, just take it as a rule। ठीक है, मतलब कि ऐसा करना है तो करना है, because again if I'll go into the selectors and all those things, it will take a lot of time। just I am giving a ID। ठीक है, एक सेक्शन का मैं एक ID दे रहा हूं, तो SEC sec1। ठीक है, section 1। some of people you would be knowing, I think it's better to use after dinner, do after there was some confusion। यार बस ठीक है, 2 मिनट दे दो, मतलब सॉरी 2 नहीं 5 मिनट दे दो। 5 मिनट में आपको डिनर ब्रेक भी दे दूंगा, वैसे भी 9:45 पे डिनर ब्रेक देना होता है। ठीक है, 9:45 तक हो जाएगा, 9:45 तक हो जाएगा, आपका डिनर ब्रेक नहीं लूंगा। ठीक है, दिस इज सेक्शन 1। देन आई विल गो एंड क्रिएट अनदर सेक्शन, दिस इज सेक्शन, वेयर इज दिस सेक्शन एंडिंग? दिस सेक्शन विल एंड एट हियर ओनली, एट एड्रेस ओनली। ठीक है, so here is the address। now we'll just go and format the code, section ID SEC sec2। ठीक है, कितना 15 मिनट का 15 मिनट्स। another section here, SE section ID section 3। ठीक है, where this section would end? I want to visit Paris।
ठीक है, हियर again I'll go and format the code, format document, and then another section, SEC section, ID, SE section 4. ठीक है, I'll just go on here and add find open way, sorry, format document. ठीक है, तो देख रहे हो हमारा पूरा आईडी, हमने जो पेज बनाया था उसको सेक्शंस में डिवाइड कर दिया. आई डोंट थिंक देयर इज एनी रॉकेट साइंस इन दिस सेक्शन. So just a quick question, just a quick question. Is the section part, I don't think there should be any problem, but in case if you have any issues or if you have like any confusion, just let me know in the just section part, just section. ठीक है. And this ID, if anyone would ask ID, why to format, अरे just the format documentation is just to make the code clean. ठीक है, मेरे को ये जाकर के ऐसे टैग वेब देना पड़ता. तो देखो ये दिख रहा है, ये आपको ऐसे दिख रहा होगा, ये सारा कोड इस सेक्शन के अंदर है. ठीक है, that would look like that. ठीक है शुभम, does that make sense? ठीक है जी, ठीक है, ठीक है. अब ना, अब बहुत सिंपल रहा, अब बहुत सिंपल रहा, अब बहुत सिंपल है. दिस इज द आईडी दैट आई हैव गिवन. ठीक है, बेसिकली ये एक सेक्शन कैसे पता चलेगा कौन सा सेक्शन है. तो आई एम जस्ट गिवन आईडी ऑफ दैट सेक्शन. यू कैन कंसीडर इट ऑफ लाइक योर स्कूल, ठीक है, योर कॉलेज और एनीवेयर. Nobody remembers na your name and all those things. You all are just like 100 human beings there, boys and girls. So the college give you an ID. ठीक है, here it is your ID, all your details are attached to this particular ID. So I have given these IDs. ठीक है, again we will be learning on very deep all these IDs. There are class, there are another things. So there is a kind of a selected topic only that we will be, when we learn CSS, we will learn there. Okay, हम जब CSS पढ़ेंगे ना तो हम इन सब के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट. अभी के लिए बस ऐसा समझ लो कि ये एक आईडी मैंने दिया. अब ना पता है क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं, ये जो रेफरेंस दिया था ना मैंने, ये रेफरेंस दिया था, यहां पर यार हैशटैग यूज करना होता है या नहीं करना है हैशटैग. लेट्स रन दिस लाइव सर्वर, जस्ट वांट टू सी व्हाट वाज द. अभी कुछ डिफरेंस नहीं दिखेगा, अभी कुछ डिफरेंस नहीं दिखेगा, अभी कुछ डिफरेंस नहीं दिखेगा, अभी कुछ डिफरेंस नहीं दिखेगा तुमको. हाँ ठीक है, एक डिफरेंस दिखा सकता हूँ, एक डिफरेंस दिखा सकता हूँ. ठीक है, देखना चाहते हो वो डिफरेंस क्या है? ORDER बॉर्डर इक्वल 1 पिक्सल. अब ये क्या लिख रहा हूँ इतना मत पूछना, ठीक है, मैं बस डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा हूँ. सॉलिड ब्लैक. होना तो चाहिए भाई. सॉलिड की स्पेलिंग मेरी गलत है. अच्छा अच्छा, OLID. अब क्या गलती रह गया, स्टाइल लिखना नहीं होता यार इसके अंदर. स्टाइल इक्वल बॉर्डर इक्वल 1 पिक्सल. like I rarely use this the 1 pixel inlines. So solid inline CSS. स्टाइल लिखना हो रहा है,
Is there a difference between why you use this section, sir? Is there no difference? Why? बताता हूँ यार, ये इनलाइन का space between solid and black. हाँ, क्या भी मैं बच्चों वाली गलती कर रहा था, लाइक इनफैक्ट मैं ऐसे इधर भी नहीं, आई ऑलवेज लाइक गो एंड मेक अनदर स्टाइल सीट, स्टाइल लाइक डिफरेंट वेब डिफरेंट फाइल फॉर द सीएसएस एंड देन जस्ट ऐड विद द एचटीएमएल. तो मैं भूल गया था कि इधर भी स्टाइल लिखना पड़ेगा, मे बी वी कुड जस्ट यूज इट डायरेक्टली. ठीक है, तो देख रहे हो यार. चलो एक बार ना मैं आपको दिखा देता हूँ ये, आपको डिफरेंस दिखेगा बेसिकली क्या हुआ अभी, कि मेरा आई एक्चुअली में कैसे देख रहे हो, अलग अलग सेक्शंस बन गए वेबसाइट वेब पेज के अंदर ही. मैंने वो वेब पेज को पर्टिकुलरली अभी तक किया नहीं था. ये थोड़ी बहुत स्टाइलिंग यूज करी है, थोड़ी बहुत सीएसएस यूज करी है. ठीक है, और इनके बाद ना थोड़ा सा मैं बी आर टैग भी यूज कर लेता हूं. अच्छा कहा किसी ने, वी कैन यूज अ बी आर टैग, वी कैन यूज अ बी आर टैग एवरीवेयर. सेक्शन 1 फॉर्मेट डॉक्यूमेंट. ठीक है, कैन यू सी नाउ, बट विदाउट स्टाइल देयर इज नो. सी सिंध, कभी सुने हो, दिखता नहीं है पर होता है. ठीक है, तो यू कैन नॉट ओनली जस्ट, अभी दिख नहीं रहा था तुम्हें. ठीक है, ममता सर, क्या बिना सीएसएस के हम सेक्शन को कैसे जाने? देखो ममता, देखो ध्यान से सुनो. ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग इज ना, सेक्शन वाज व्हाट आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू सेड. Okay. See, okay, sure. Maheshwari, are you from batch 19? Okay, good to see you. देखो, see. Without this border part, there was still there. I think Sindhu. Your name is Sidhu, right? If I'm right, your name is Sidhu. Okay, yes. ठीक है, देखो सिद्धू, देखो ध्यान से देखो क्या है. ये ना वेब पेज के ऑलरेडी इतने पार्ट्स बन चुके थे. ठीक है, मैंने क्या किया, ऐसे सोचो बहुत एक, जस्ट आई विल गिव यू अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल. यस. ठीक है जी, लेट्स आई विल गिव यू अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल. Here it is. This is a plot of land. ठीक है, ये एक बड़ा सा लैंड है कह लो पहले. सॉरी. This is a very big plot of land. Okay, where you have purchased this. Section. Okay, you have purchased this section. When you are writing your while purchasing, you know that there are geographical locations. There are geographical locations that is being written on the papers. Okay, for everyone others also this will make sense to you. Don't worry, this will make sense to you. So this is the geographical location that is the geographical, that is being. What you did na, you just added a border to your land. You just added a border. Maybe I would add a highlighter. You did a fencing. Now when you did a fencing, what happened? It is visible. Okay, this is a particular section. That is yours. It is now visible. In case now, I just go and do this.
ठीक है, इतना क्यों मैं मेहनत करूँ, एक बार में हटा दूंगा। हट क्या बात है, ठीक है। It will just go and do this. Yes sir, to know the specific. Now see, it is still, it is still, see, when I'm going थोड़ा सा मैं इसको I'll do this little bit this side, ठीक है। See, can you see it is again selecting that particular area when I'm hovering over to the section 1? Can you see it is selecting that particular section? When I am selecting the section 2, देखो, see, when I am hovering over select section 2, it is taking that particular area. Section 3, that particular area. Section 4, that particular area. Okay. So basically adding that border was like adding a fencing to your land area. In case you don't fence that, once you have bought the land, once you have registered the land, it is still your land. It is not that anyone else will come and take away that land from you. Okay? It will still remain that land. In case you just want to do the visibility for a better understanding, for a better visibility, so that in from दूर से भी देख करके आपको लगे कि हाँ मेरा कौन सा एरिया है, you can always go on, you can always go on to this inspect part and you can check like, or maybe in the desi bhasha if I say, you can always go and open your registry paper and you can see where your land is. See, here your land is. Are Ricky, see, it is nothing, it is just closed. Okay, it is just nothing. The text that is wrapped inside. So you can say that was just wrapped. The text was shrinked. So that is. Okay. This is the entire HTML code. This is the entire HTML code that we have written. In a specific part, kind of a specific part owned by section 1. Okay, G. Okay. Fine. I hope the sections is clear to everyone now. Can I assume that? Or would it be wrong for me to assuming that all the 36 students sitting in this class right now have understood sections very clearly? In order to assume that, I need 36 replies. I have now only 16. Yes. Very good. Vera condition. Okay. Sure. Now the only thing is the only thing that is left is adding that particular section to that page. Okay? Adding that particular section to that page. That would be SEC1. I'm not sure कि मेरे को ये करना भी चाहिए. हाँ, हो रहा है, वर्क कर रहा है. Section 2, Section 3, Section 4. Okay, now let's come here. First part, second part. Acha, you all might not able to visualize the difference. There is a reason for that. कि like the web page ही बहुत छोटा है, तो what I will do is I will go at each section's page, at every page, and just give me 1 minute. BR into 150. ठीक है. Section 2,
BR to 150। यार देखो, जब घर ही छोटा हो तो उसमें कोई कहाँ ही खेलेगा। BR into 150। BR into 150। The size, can I have some random data? Yes. अरे हाँ, मैंने I have just added a lot of BR tags. I have a lot of BR tags. Now the my web page is ना, my web page is very big, very big. ठीक है? और not very big, very long. My web page is very long. Okay. अच्छा देखो, एक और चीज बहुत आप लोगों ने बहुत एक प्यारी चीज नोटिस करी है इन लिंक। कैन यू जस्ट नोटिस अस वेरी, कैन यू टेल मी अ वेरी, I just want to check how many of you have a very critical thinking or like observation skills. Color after click. Yes, 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 yes. Very good, Shraddha. Very good. जिसको एक बार क्लिक करो उसका कलर चेंज हो जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आई एम रियली वेरी हैप्पी। ठीक है। Now if I just click the first part, can you see the first section is coming here? If I click the second part, the second section is coming here. There is when I'll click the third part, the third section is coming here. When I'll click the fourth part, the fourth section is coming here. Like the basically, then we don't have any other space for the space. ठीक है? I hope this is clear. ठीक है, ठीक है, ठीक है। Just give me घड़ी के टाइम से, ठीक है, इट्स 9:50, जस्ट गिव मी 3 मिनट्स। थोड़ी छोटी छोटी दो तीन चीजें हैं आपको बस बतानी है। आफ्टर दैट लिंक विल बी ओवर। ठीक है, वी कैन गो विद द मल्टीमीडिया आफ्टर द ब्रेक। जस्ट वेरी सिंपल सिंपल स्मॉल थिंग्स। The one of the very important thing was when we start, when we just like open this web page, when we open this web page, then I click here to go on the HTML page. When I click, it is, can you see like it is opening the same web page, same web page. Rather than again I will go to my favorite website Amazon, and वैसे तो पैसे हैं नहीं, बट iPhone 13 खरीदने का कोशिश करते हैं, नो वरीज। एंड जस्ट सी हियर, जस्ट सी हियर, अगर मैं if I'm just clicking Amazon, the main website is still here, the main website is still here, it is taking me to a complete different web page। क्या कर रहा है? a different web page। एक और चीज देख लेते हैं। 13 Pro Max 1,30,000, मेरी 10 लाख सैलरी होगी तब भी ये फोन नहीं खरीदूंगा मैं। CSS period section and the other part can we can yes, yes Ricky, you can do that। you have to then put a very relative absolute sorry, very absolute how to say this, very absolute links to that। ठीक है, ठीक है। देखो, तो ये करना है, तो बेसिकली मैं चाहता हूं कि मैं अभी अपना सिंपल, अभी अपना मेरा जो वेब पेज है, माय करंट वेब पेज शुड बी देयर ओनली, it should not be hampered, then it should open as a new page in a different tab। okay, ठीक है जी। फॉर दैट ना कुछ नहीं करना है, सिंपल, वेरी सिंपल। हियर यू आर यूजिंग, जस्ट यूज टारगेट ब्लैंक, जस्ट दिस सिंपल। इसको टेक इट एज अ रूल और समथिंग इज लाइक दैट, ये ऐसा ही है। ठीक है, टारगेट। नाउ now if I'll just open my document, now if I'll just open my document, see my main web page is here, it is taking me to a different web page। ठीक है, ठीक है जी। एक दो तीन और भी चीज हैं कि लास्ट में से देना वन पेज once again please,
देखो, the idea was कि I wanted to make something like that, ठीक है, कि when I'm clicking the web page, it should take me, the current web page should not hamper my the new web page should not hamper my current web page. That was the idea. That was the idea behind that. Let's take on another. Let's try to buy this time this phone. See, my current web page is not hampered anywhere, isn't it? My current web page is not hampered anywhere. If, for example, I'll go here and here if I'll buy, देख रहे हो, ये करंट वेब पेज में खोल रहा है, ये करंट वेब पेज में खोल रहा है. This is opening in a current web page, but I wanted to open in a different web page. Current web page नहीं hamper होना चाहिए. For that, you need to just go and do simple one thing. You just go and in the H tag, anchor tag only, you just add one more attribute, or you can say target equal this blank, this underscore blank. It will open your web page in a different browser. See here, my current web page is not hampered. My new web page is open in a different website. Okay. Okay जी. Okay. Very good. Very good. Very good. देखो, छोटे छोटे चीजें और हैं. एक दो मिनट रुक जाओ और, ठीक है, 2 मिनट, जस्ट गिन के 2 मिनट. Just be here with me for 2 minutes. After that, I'll give you a complete 15-minute break. Complete 15-minute break. Just because दोबारा से यार ब्रेक के बाद लिंक नहीं पढ़ना है, कुछ नया पढ़ेंगे. एक और चीज होता है एंकर टैग में, सिंपल. Here you can write mail to, and maybe I will write my mail VIKTIWARI Vic Tiwari 12 @gmail.com. ठीक है. Or you can write here in a you can email email, you can mail अरे यार, mail me REGARDI regarding the scene. ठीक है. Here I'll give a p tag. ठीक है. I will just give a end tag. डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कर लेते हैं. ठीक है. देखो इससे क्या होगा. हेलो एवरीवन, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज. नहीं, ये रहा मेरा मेन वेब पेज. ये. ठीक है. यू कैन थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं. हाँ. नाउ इट इज वेरी सिंपल. using this mail to, right, you can directly, this will be a clickable link and this will open the email. अब जो भी तुम्हारी डिफॉल्ट ईमेल ब्राउजर है और देख रहे हो, डायरेक्टली द ईमेल, योर ईमेल एड्रेस विल बी सेंट हियर. ठीक है. योर ईमेल एड्रेस विल बी रिटन. मतलब कहीं ये चीज आपने बहुत बार अपने लाइफ में प्रैक्टिस की है. ठीक है. मतलब नॉट प्रैक्टिस, मतलब बहुत बार यू हैव एनकाउंटर्ड दीस टाइप्स ऑफ थिंग in your day-to-day life, where you have seen, just like contact me in a website. Yes, contact me link in a website. So this is the basic things. ये सारे मतलब at the start of this particular link class, I told you कि there will be something I'll be telling you at the last of the class. ठीक है. मतलब same चीज है. There is one more thing. You can just write paragraph tag and like you can a tag and tell plus 91. चलो, for you all, you can take my number. I am writing my own number only. मतलब ओरिजिनल नंबर ही लिख रहा हूँ. एनी डाउट एनी टाइम पूछ लेना. बस यार टेक्स्ट कर देना एक बार पहले, कॉल करने से पहले. 117970966. This is my original number, real number. Here the HTML code, enter this code. अब मैं HTML कोड पूरा वेबसाइट पे, मतलब GitHub पे पोस्ट करके इसको GitHub का लिंक ही भेज दूंगा. Every day it will be posted. ठीक है. You can
TACT, contact me here, me here. ठीक है, देखो, if you just, because laptop cannot typically call, it will just go like this. ठीक है, it will just go like this, as simple as. ठीक है, इसमें मतलब कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, टेल एंड ऑल एंड कुछ और भी चीजें हैं। हाँ, एक और चीज है, बस एक और चीज, 1 मिनट और। लेट्स टेक दिस पेज एंड हियर ना, कई बार आप लोगों ने एक और चीज देखा होगा, बहुत सिंपल सा है, क्लिक हियर, बैक टू टॉप, click here to go to CLIC, click here to go to anchor tag, बस हैशटैग, सिंपल हैशटैग दे दो to top। ठीक है जी, तो देखो इससे क्या होगा, व्हाट विल हैपन विद दिस, here you can see click here to go on the top, you'll click like this is something, मतलब ऐसा कुछ है ना जो आप अपने रियल लाइफ में, मतलब डे टू डे लाइफ में you have been encountering this thing regularly, but you actually don't know what was the logic behind that. Now you know. अब ऐसा होगा ना कि when you will go to a website, you will be, oh, this HTML code is used here. So simple, just you click here, you will go to the tab. Only just you at the href, you can use hashtag also, you can use this also. Okay, it will still work. It will still work. It will still work. यार ये क्या हो गया, कई बार ये काम करता है। चलो आज के लिए हैशटैग से काम चलाओ, अभी कुछ देर पहले तक ये काम कर रहा था। ठीक है, शुरू मजबूरी में किया था, अब मजा आ रहा है। अक्षय, क्या शुरू मजबूरी में किया था, अब क्या मजा आ रहा है? मिर्जापुर, अखंडानंद त्रिपाठी, गुड्डू भैया। ठीक है यार, चलो एक ऑनेस्ट जवाब, एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, ब्रेक के बाद कितने लोग ऑनेस्टली वापस आ रहे हो क्लास में? बस 14 बच्चे, 15, 35 स्टूडेंट्स आर हियर। living not living। ठीक है, ठीक है, ठीक है यार, रेस्ट ले लो। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे मजे से मल्टीमीडिया टैग, इमेजेस, वीडियोस। 15 मिनट का ब्रेक, 15 मिनट का ब्रेक, 10-2 हो रहा है, 10-15 तक ब्रेक, मतलब 10-17 तक ब्रेक है। ठीक है, मस्त। इसके बाद मल्टीमीडिया टैग पढ़ेंगे, विल स्टडी इमेजेस, वीडियोस एंड ऑल की, मतलब वेबसाइट में वीडियोस, इमेजेस, ऑडियो, और उसमें भी आपको मस्त मस्त चीजें बताऊंगा। ठीक है, जो नॉर्मली, अगर इफ एनीवन ऑफ यू आर इनटू गुड हैबिट ऑफ रीडिंग ब्लॉग्स, ठीक है, यार मैं भी थोड़ा पानी वानी पी लूंगा। ठीक है, मेरे अंदर भी थोड़ा एनर्जी आ जाएगा, गला वैसे भी सूख रहा है। तो ठीक है, 15 मिनट का ब्रेक रहता है। ठीक है, 15 मिनट ब्रेक। ठीक है जी, चलो सभी मस्ती से मजे करो, खा लो खाना, एनर्जी ले लो, एंड इसके बाद मस्त मल्टीमीडिया टैग पढ़ेंगे। जो भी क्लास मिस करेगा, तुम्हें बता दूं, इसमें दिक्कत होगा तुम्हें फिर से जाके,
CSS पढ़ने में अलग चीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं इसके बाद हम, मतलब इमेजेस वीडियोस वगैरह कैसे टॉपिक करने वाले, फिर अगली क्लास में मत पूछना कि भैया ये पूरा बता दो। तो ब्रेक ले लो, आराम कर लो अच्छे से, क्योंकि आई नो कि एनर्जी की जरूरत है, ब्रेक की जरूरत है। 3 घंटे क्लास आसान चीज नहीं है, 8 घंटे 10 घंटे नौकरी करने के बाद या काम करने के बाद। तो इसका सही फायदा उठाओ और क्लास में आ जाना दोबारा से, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, कर लो खाना पीना अच्छे से।
अच्छा, ओ म्यूट पे था, म्यूट पे था, म्यूट पे था। कैन यू ऑल हियर मी नाउ? ठीक है यार, 1 मिनट और रुकते हैं, 1 मिनट और रुकते हैं बस, ताकि तब लोग आ जाए। ठीक है, 1 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूँ। युवराज, लास्ट में, ठीक है, लास्ट में। I'll happily answer your question, but last में। ठीक है, चलो। तो अपन अपना मल्टीमीडिया पढ़ते हैं। क्या यार, तुम लोग अब रुलाओगे मुझे क्या? 34 स्टूडेंट्स आर बैक। मल्टीमीडिया, ठीक है। तो देखो, मल्टीमीडिया में सिंपल ही है। अ, अपन पहले पढ़ेंगे इमेजेस के बारे में। We'll be studying with for the images, then we will study about audios, ठीक है, and then we will study about videos, then we will study for videos, videos, ठीक है। Cool. तो सिंपल, मतलब इट विल बी एज सिंपल एज इट इज। अपन ना पहले, मेरे पास आई डो नॉट हैव एनी इमेज ऑन द डेस्कटॉप, सो I'll do one thing. I'll just go on this iPhone and then ठीक है। I'll do ना, I'll take a screenshot of this sample, ठीक है। Just give me, I want some images, good images, and then we can just take some other phones also, uh, some other devices, iPad maybe, iPad, Apple TV, Apple Watch, iPad। तो ये रहा अपना iPad। ठीक है, और एक मैकबुक ले लेते हैं। 3 चीजें एप्पल के साथ 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 अभी जो नया वाला आया है। तो नहीं भाई, ऐसा नहीं करेंगे, मतलब इमेजेस पढ़ाने के लिए इमेजेस तो होने चाहिए ना। मैंने क्लास से पहले ये कर लिया था,
क्या कहते हैं, कुछ म्यूजिक कुछ वीडियोस फाइल ले लिया था, पता नहीं क्यों मैंने भूल गया लेना, और शायद कुछ। तो देखो ऐसा करते हैं, ऐसे ना ये 3 हैं, इनको इधर ही आके नहीं यार, इनको इसके अंदर मूव कर दो फाइल के। मूव, ये मेरा आईफोन है, तो आई जस्ट रिमूव IPHONE आईफोन। आई दिस इज आईपैड, आईपैड, दिस इज मैक, मैक। ठीक है, तो देखो यार कुछ किया ही नहीं राहुल, कुछ तो किया ही नहीं मैंने, किस चीज का प्रोसेस पूछ रहे हो? demo.html, ठीक है यार। तो देखो ये रहा अपना सिंपल सा पेज, ठीक है, बॉडी पैड। नाउ लेट्स लर्न अबाउट, नाउ लेट्स लर्न अबाउट मल्टीमीडिया, TIMEDIA, मल्टीमीडिया। ठीक है जी, मल्टीमीडिया के बारे में पढ़ते हैं, तो बहुत बढ़िया। स्टार्टिंग विथ इमेजेस, ठीक है। तो द वेरी सिंपल थिंग इज फॉर इमेजेस, you just use this image tag, ठीक है, you just use this image tag. The source is the source of the code that you are providing. Maybe I will start with the image, iPhone image, ठीक है, very good. This alternate text is something कि sometime you see ना on Amazon only. अभी तो maybe I might not find a specific example, ठीक है, I might not find a specific example. There sometimes you don't find some images, ठीक है, the images is not being loaded or something like that, and there is some text. SRC is the source of the source, the source. This is the file. देखो यार ध्यान से देखो, the name of the, since I have put it in the same folder, I do not need to provide the absolute source. Here I'm just writing its name. Okay. Alternate text is iPhone. I might write this is IPHONE, iPhone. I'll just show you a demo, quick demo of that. ठीक है. If here now this cannot find the image, this cannot find the source, so here it is an alternate text, as simple as it. I don't find any rocket science in this. Okay, I really don't find any rocket science. It is like if the image cannot find, or sometimes the image cannot load, or something like that, so you just put there. Okay, so here it is. At the same time, in the, like you can see it is taking my entire website, or entire website. It is not very good, very clean and all those things, मतलब ठीक है, ऐसे तो नहीं दिखाना चाहता था मैं. तो here also you can just go and write width maybe ki 200 pixels. Okay, HEI height 200 pixels. Okay, you can adjust that. Maybe width would be 150 pixel would be a right. 106. Yeah, it is good. It is looking like an iPhone now. Okay, just as simple. Just use the image. It does not have a closing tag or something like that. You can just use it. Okay, you can just use it, and at the same time, ठीक है.
Sir, once, if possible, please explain the relative directory folder to like this, how to move into out of the directory folders. Okay, Akshay. Okay, Akshay. I'll do that. I'll do that. I have an iPad folder in day 2. Use iPad here. Now I want to display. ठीक है अक्षय क्या नाम है भाई का अक्षय is that your question ना I hope कि I'm addressing your question ठीक है अक्षय so चलो this could be time you are taking keeping them in the same directory how folder in the day 2 folder iPad picture in the day stack. So here I'll just go here and you can see the copy path or you can say the copy relative copy path. I'll just see here. Okay. The entire path. Okay. What I can skip for now is since the maybe ki अच्छा पहले तो alternate would be iPad it cannot find why it cannot find front end major since we are in the same front end folder it should not ask copy relative path ठीक है जी it is the same I'm using the relative path is the same I'm using voice breaking मैं कुछ बोल नहीं रहा था I was not speaking anything but why it is not taking
No, 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 no. Class is not over. Class is not over. Really sincerely, I apologize. All the sudden, all the network broke out, and I was trying to troubleshoot the issues, but I don't know what happened. Can you all hear me? Can you all hear me? Sidhu, you can speak if I can hear, and okay, guys, class end for today. Okay, class end for today.
दिया। अच्छा, वेट वेट वेट, yeah, you can unmute yourself now. Sidhu, you can unmute yourself. You can unmute yourself, Sidhu.